Hello students, welcome to my channel Academic Seed. In this video, I am going to solve question number 3 of exercise 4.3. Chapter name is Quadratic Equations. Third question is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. First of all, what you will take, you will consider the width as x. Let the breadth of the rectangular groove of a rectangular mango groove be x. So what about the length? Length is twice its breadth. So length of a rectangular mango groove be twice of width, that is 2x. And the area is given to you as 800 मीटर स्क्वायर. एरिया जो है आपको गिवन है 800 मीटर स्क्वायर. व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो एरिया आपको 800 गिवन है, लेंथ आपके पास 2x है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे विड्थ के साथ यानी कि x के साथ. सो 800 विल बी इक्वल टू हाउ मच? 2x स्क्वायर. क्लियर? आपके पास क्या आ गई? 800 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 2x स्क्वायर के इक्वल. अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप x स्क्वायर को इक्वेट करेंगे. अब आप x स्क्वायर को इक्वेट करेंगे, 2 को आप डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे. x स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच? 400. x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया आपके पास? 400 के इक्वल. x square is equal to 400. So to make it a quadratic equation, what you have to do? You have to take the 400 to the left hand side. So it will become x minus 400 equal to 0. Students, ये आपके पास एक quadratic equation आ गई है जिसमें कि आपके पास x की जो maximum power है वो क्या है? 2. So ax square plus bx plus c equal to 0 is the ideal quadratic equation. And in this quadratic equation, value of a is equal to 1 as 1 is the coefficient of x square and value of b की वैल्यू आपको गिवन नहीं है इक्वेशन में, x square minus 400 गिवन है. क्लियर? यानी कि आपके पास 400 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, और x की वैल्यू तो आपको गिवन नहीं है इक्वेशन में, तो हम b की वैल्यू को क्या कंसीडर करेंगे? 0, क्योंकि आपके पास b की वैल्यू गिवन नहीं है इक्वेशन में. c की वैल्यू क्या गिवन है आपको? -400. आप डेटर्मिनेंट के थ्रू फाइंड आउट करेंगे कि मैंगो का ग्रूव आप डिजाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे आप डिजाइन? सबसे पहले आप डेटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. व्हाट इज डेटर्मिनेंट? डेटर्मिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. थ्रू दिस यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, एंड इफ इक्वेशन हैज रियल रूट्स, मैंगो ग्रूव कैन बी डिजाइंड. क्लियर? नाउ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर एज 0 minus 4ac. What is the value of a? A value is 1 and c value is minus 400 equal to 0. So it will become how much? 4 4s are 16, so it will become 1600. Minus minus will become plus, so 1600 is greater than 0. 1600 is greater than 0, so the equation is real. Why equation is real? Because it has real roots. Equation is real as it has real roots. Why it has real roots? Because 1600 is greater than 0. Now what you will do? You will find out the value of length and width. Length और width की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? By using this equation, quadratic equation, which is equation number 1. So by using equation number 1, you will find the value of length and breadth. Length और breadth की वैल्यू आपको कहां से मिलेगी? इक्वेशन नंबर 1 से. इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपकी? x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0.
अब आप एक्स स्क्वायर के इक्वेट कर देंगे किसको, 400 को. नाउ एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 400. अब आप 400 का क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे. 400 के क्या फैक्टर्स होंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 20. सो इट विल बिकम प्लस 20 एंड ऑन द अनदर एंड इट विल बिकम माइनस 20. नेगेटिव में तो आपको पता है आपके पास वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि आपके पास लेंथ और विड्थ किस में आती है, पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स क्या है आपके पास, एक्स इज द विड्थ. क्लियर. सो योर ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाउ मच, 20. Breadth is how much, 20 centimeter. Width is 20 centimeter and length is how much, twice of width. Length क्या थी आपके पास, 2x. 2x that means 2 multiply by 20 it will become 40 centimeter. So length is how much, 40 centimeter. Width is how much, 20 centimeter. तो आपके पास आंसर आ गया है. सो मैंगो ग्रूव कैन बी डिजाइंड. व्हाई इट कैन बी डिजाइंड, बिकॉज द इक्वेशन इज रियल एंड इट हैज रियल रूट्स. So that's why mango groove can be designed and the length of the mango groove will be how much, 40 centimeter. Length of the groove will be how much, 40 centimeter. And what will be the width? Width is 20 centimeter. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है, बहुत ही इजी था. इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4.